हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ग्रेप्स का ड्राइंग और कलरिंग सिखाने वाली हूँ। ग्रेप्स और ग्रेप्स का स्टेम कलरिंग करने के लिए मैंने ये सारे कलर यूज़ किए हैं। अभी चलिए ग्रेप्स का ड्राइंग शुरू करते हैं। ओवल शेप ड्रॉ करके आप ग्रेप्स ड्रॉ कीजिए और ऐसे ही आप सारे ग्रेप्स ड्रॉ कीजिए। ग्रेप्स के ड्राइंग के साथ आप स्टेम ड्रॉ कीजिए। ग्रेप्स का ड्राइंग खत्म होने के बाद कलरिंग शुरू कीजिए। कलरिंग के लिए लेमन ग्रीन से बेस टोन दीजिए। और हाइलाइट्स बनाने के लिए उस जगह कलर मत दीजिए। डार्क टोन देने के लिए लेमन ग्रीन को ज्यादा प्रेशर देके कलर दीजिए। और येलो ऑकर से मर्ज कीजिए। लाइट येलो से ग्रेप्स में पूरा कलर दीजिए और बर्न्ट ऑकर से कलर दीजिए। फाइनल टच के लिए लेमन ग्रीन दीजिए। ऐसे ही आपको सारे ग्रेप्स कलर करना है।
हाइलाइट्स के लिए जगह छोड़ना मत भूलिए। स्टेम कलरिंग के लिए आप पीट ब्राउन से बेस टोन दीजिए और लाइटली लेमन ग्रीन दीजिए। मीडियम टोन के लिए ब्राउन कलर दीजिए। स्टेम का डार्क टोन देने के लिए डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर दीजिए। ग्रेप्स का शैडो बनाने के लिए लाइट येलो और लाइट ग्रे दीजिए। और डार्कर शेड के लिए ब्राउन दीजिए। अभी ग्रेप्स का ड्राइंग और कलरिंग ख़त्म हो गया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।